Welcome back to Chai and Crime, where we sip chai and spill some of the craziest true crime stories from around the world. I'm Mariam Nadeem. And I'm Najwa Walid, and we have our co-hosts with us, Momina Bhatti and Fiza Kashif. And today's story, let's just say it's the ultimate mix of hackers missing millions and one tiny typo that saved billions. That's right. This is the story of Bangladesh bank heist. A cyber attack so bold it almost pulled off $1 billion. But a spelling mistake can change everything. In early Feb 2016, employees at Bangladesh Bank, which is the country's central bank, noticed something strange. Their printer, which was supposed to automatically print records of financial transactions, wasn't working. They didn't realize that something far bigger was happening behind the scenes. The hackers sent dozens of fraudulent transfer requests to the Federal Reserve Bank of New York, trying to move almost $1 billion from Bangladesh's account. Now, what is the New York Fed? That is the main question. It is one of the 12 regional banks that make up the US Federal Reserve System, so it's basically the central banking system of the United States. So it is like the safe vault of the world where countries keep some of their money to make big international transactions easier and safer. In this heist, hackers targeted Bangladesh Bank's account at the New York Fed because that's where the country kept a chunk of its foreign reserves. So this is basically where the real big money was. The actual hacking was done remotely. The money was sitting in Bangladesh's bank account at the New York Fed. अच्छा, so basically हुआ ये था कि hackers ने बांग्लादेश का जो internal account है ढाका में उसको हैक किया था, न्यूयॉर्क फेड अकाउंट को हैक नहीं किया था. उस अकाउंट से उन लोगों ने उनके क्रेडेंशियल्स और स्विफ्ट कोड्स जो कि आपको इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स में रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ से उनको हैक कर दिया था, एंड देन दे सेंड फेक ट्रांसफर रिक्वेस्ट टू द न्यूयॉर्क फेड. So the New York Fed, believing the requests were real, started processing the money transfers और फिर इन पैसों को भेजा जा रहा था to Philippines and श्रीलंका. और ये वाले basically पैसे जा रहे थे to bars and night clubs and casinos. तो वहाँ पे कोई वो check and balance है नहीं कि अगर इतनी बड़ी amount आ रही है तो what's the point? Nobody questions anything. So the scariest part of this wasn't a quick in and out cybercrime. They spent nearly half a year preparing, and that's how, watching how the bank operated, studying payment routines and testing their malware to perfection. Half a year. So dedication थी full on एक साल लिया to study everything, and then internally because यहाँ पे एक और ये भी बात थी कि जो बांग्लादेश का internal system जो उनका ढाका में उनके अंदर firewalls नहीं है, तो it's very easy कि आप उसको बड़ा आराम से system. उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी तब ये वाला इशू रेज हुआ था कि यू डोंट इवन हैव फायरवॉल्स, तो आपने इतना बड़ा वो भी फॉरेन रिजर्व्स आपने प्रोटेक्ट कैसे किए हैं अगर आपके पास वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड. I don't like banks. Nobody likes banks. They're my worst enemy. So. Your worst enemy? Yes, one of them. Okay. Okay, so when we move on to the actual heist itself, on February 4th, the hackers launched their attack, sending 35 transfer requests to the New York Fed, amounting to almost $1 billion. Like, that's crazy. 35 requests. And their plan was super smart, obviously. Spread the money across casinos, fake businesses, and accounts, like Fiza said, in the Philippines and Sri Lanka. And honestly, it worked. Okay. $81 million got through before anyone could even stop it or notice it. Like, forget about trying to stop it. They didn't even notice it. Really not? The money flowed into casinos in Manila, where it was laundered and quickly disappeared, obviously. But this is where they messed up. There was a typo that changed everything. Imagine इतना time उन्होंने spend किया just because of a typo. It's like, all stop It while was like, you're it was ahead. like that episode in Brooklyn Nine-Nine where it was like Amy को इसलिए नहीं पसंद था the heist person, the thief, because he had a typo in his contract bills. 2 hours in pluribus. Mashallah. This is how they're basically caught. Like we said, the typo. One of the fake transactions was flagged because hackers spelled the word foundation as foundation. Oh. Yeah. So How dumb do you have to they be? skipped out the O in the beneficiary's name. This simple spelling mistake caused the Dutch bank to pause the transfer and ask for clarification. So it's like, itni choti se baat. Imagine. So the Dutch bank, by the way, it was acting as a routing bank for one of the hacker-initiated transactions. When they received the instructions, they noticed that the name was misspelled. So in international banking, especially for large transactions, the spelling of names has to match perfectly, obviously हाँ, with registered accounts and legal documents. If something looks suspicious,
like the spelling mistake did, banks are required by anti-money laundering regulations to pause a transaction and ask for a manual confirmation. And Dutch Bank wasn't the final destination. Obviously, they were a middleman, a correspondent bank. That's why their compliance check mattered. Otherwise, the money would have flown straight through without anyone noticing. So they played pretty critical role, I would say. And that tiny delay gave Bangladesh Bank and Federal Reserve enough time to spot the fraud and freeze the remaining transactions. So, like, if that one typo had not happened, they could have made off with nearly $1 billion. Exactly, that's crazy. Like, just Itna well executed plan, and it was going so they good. planned for almost a year. And it was going good. Flow itna acha kar Everything tha. Execution else was all worked. good. Just a typo messed They it up. just missed that one O in foundation, Damn. and that messed up everything. Now, moving on to the investigation. After the high cybersecurity experts like Adrian Nish were responsible for the investigation. So, what he found out was basically that the hackers had customized malware which could intercept transaction confirmations, delete logs, and even reboot servers. So, eventually, what the investigation revealed was that Bangladesh Bank had no firewalls, as I mentioned earlier, and also that they used second-hand $10 switches. Yes. So, like, the investigation revealed that they were asking for it. Yes. Oh. They didn't have any security measures to, That's what prevent. I mean. Come on, yaar. Exactly. Seriously? अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई थी तो यही वाले जो हैकर्स थे ना दे वर लिंक टू अनदर ग्रुप नोन एज द Lazarus ग्रुप दैट आर बिलीव टू हैव टाई टू नॉर्थ कोरिया और ये सेम हैकर ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द सोनी पिक्चर्स हैक बैक इन 2014. Interesting. What was that? यह सोनी पिक्चर केस बेसिकली ये था कि बैक इन नवंबर 2014 उनका पूरा सिस्टम हैक कर लिया था. इट इज़ बिलीव्ड कि यही सेम Lazarus ग्रुप था जो अभी वाले केस में भी है कि दे वर थिंकिंग ऑफ लॉन्चिंग अ फिल्म. उसका टाइटल था द इंटरव्यू एंड इट वाज बेसिकली मेड फन ऑफ नॉर्थ कोरियन जो लीडर है ना Kim Jong-un. यस एग्जैक्टली उनका मजाक उड़ाया हुआ था. तो एज अ रिटेलिएशन उन लोगों ने ये हैक कर लिया था बिकॉज ये नॉर्थ कोरियन ऑर्गेनाइजेशन है. तो काफ़ी नुकसान हुआ था सोनी पिक्चर्स का. उन्होंने उनका काफ़ी अनरिलीज पिक्चर्स हैक कर ली थी. उसके अलावा प्राइवेट कॉन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड डिफरेंट एक्टर्स वो भी इट वाज आल्सो हैक्ड और जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी ऑफ डिफरेंट एक्टर्स दैट वाज आल्सो हैक्ड. तो इस पर काफ़ी ज़्यादा उनका सोनी पिक्चर्स का नुकसान हुआ था. मॉनिटरी टर्म्स में तो हुआ ही था बट उसके साथ उनको काफ़ी डेफेमेशन और काफ़ी एक्टर्स ने भी उन पर केस कर दिया बिकॉज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी था एंड एवरीथिंग. तो ये वैसे एक रिटेलिएटिव वो था अटैक था सोनी पिक्चर्स का जो सेम ऑर्गेनाइजेशन ने किया था. तो दैट इज़ बिलीव्ड कि ये दोनों केसेस सेम ग्रुप ने किए थे. इसमें मीडिया की कवरेज कितनी थी इस केस के ऊपर अराउंड इट? वाज इट अ लॉट? I don't remember. It's not mentioned. नॉट मेंशन्ड? तो Just- मीडिया ने बहुत कम रोल इसमें प्ले किया. यार इतना ज़्यादा था नहीं बिकॉज इट वॉज मोर ऑफ अ हाइस्ट के बेसिकली इस पूरे हाइस्ट में हुआ क्या था कि हैकर्स ने टारगेट किया उनके जो उनका जो स्टेट लेवल बैंक था उसको और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया और फिर वहाँ जो उनका न्यूयॉर्क फेड में अकाउंट था वहाँ से पैसे चोरी हुए हैं. ठीक है. सो इट्स नॉट बेसिकली कि ढाका के अंदर ये हाइस्ट हुआ है. इट्स बेसिकली न्यूयॉर्क. इंटरनेशनल लेवल्स. लेकिन न्यूयॉर्क जो है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं लेगा बिकॉज वो उनके Obviously. इंटरनल सिस्टम से ये ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेजी गई थी. This was the problem, like we were in investigation वाले part में that they had evidence that the hackers were inside the bank system studying for months. So the failure was on Bangladesh Bank's part. Obviously, सही है. It was not. It can't be tied to New York at all. But still, connection. तो था थोड़ा बहुत connection. मतलब yeah, but the biggest thing is Bangladesh Bank's failure. True. Uski where it would have been difficult, like it would have been impossible for this scam to happen. The problem did happen on Bangladesh one side. So you're saying that it cannot be connected to New York. I mean, And they obviously, did not face any like. it is connected to New York. उसके साथ वो नहीं हुए. It is connected to New York, but the bigger problem here is the failing of Bangladesh Bank, because if they had not, like, been so lax with their security, मतलब obviously यार आप एक national bank हो, like you're मैं controlling. पूछ रही हूँ कि did it impact New York वाला bank in any way? बिकॉज Did it? देखो न्यूयॉर्क की इसमें कोई गलती नहीं है.
they're not even involved. उनको एक internal request आई कि आपने ये वाले पैसे इस बैंक से इन जगहों पे ट्रांसफ़र कर देने. Basically, New York was just holding the money for Bangladesh. Yes, it's basically a safe vault ना, जहाँ पे बहुत सारी जो countries हैं वो अपने पैसे रखवाती हैं. So that is like it's a federal bank. तो यहाँ पे ये बड़ा normal सा है कि international transactions में भी makes it easier कि अगर आपने पैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसफ़र करने हैं तो you use New York Fed. तो यही किया था, लेकिन मसला ये था कि ये पकड़ा भी ऐसी कि जैसे मोमना मेंशन कि जितने भी राउटिंग बैंक्स थे, क्योंकि अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो वो एक ही बैंक के थ्रू नहीं होती है. तो वो ढाका से रिक्वेस्ट आई, न्यूयॉर्क ने डिफरेंट राउटिंग बैंक जिसमें डच बैंक एक था और उसने ऐसी, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको वो करना होता है, तो उन्होंने बस क्रॉस चेक किया, मैंने क्लैरिफिकेशन मांगी, तो वहाँ पे ये पकड़ा गया. तो दैट्स हाउ इट बेसिकली हैपेंड. न्यूयॉर्क के लिए वो स्टैंडर्ड जो रूटीन की ट्रांजैक्शन होती है वाज वन ऑफ देम. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम. ये क्योंकि मसला सिर्फ बांग्लादेश के लिए, बिकॉज उनके स्टेट बैंक से उनका जो मेन जहाँ पे उनके फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, तो बिग मनी, वहाँ से पैसे गए. एंड ऑब्वियसली पैसे उनके ही हैं ना, लाइक उन्हीं की वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ है. इतनी वीक सिक्योरिटी यार, आप स्टेट बैंक को थोड़ा बहुत तो आपको करना चाहिए ना, आपकी सिक्योरिटी को तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ओके, कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके बहुत ज़्यादा थे. द फॉल आउट वाज मैसिव. बांग्लादेश बैंक के जितने भी ऑफिशियल्स थे, मोस्ट ऑफ देम दे लॉस्ट देयर जॉब्स. इंटरनेशनल बैंकिंग सिक्योरिटी वाज कॉल्ड इनटू एक्शन. And then the case also triggered global conversation about how vulnerable financial systems are, and even at the highest levels. Naturally. New York Fed की बात है ना. Despite recovering some of the stolen money, most of the $81 million is still missing, and the hackers are still free. So like, there's no real resolution. I Wait, think weren't they held accountable? Hackers in this case are mostly like ये लोग anonymous होते हैं. You cannot really track down. नहीं, but आपके international एक वो investigation होती है, so people have been persecuted They know for how these to things. cover up their tracks. Of course they do, but it's not unheard of, and in such a big like. I'm pretty sure if they thought about this plan और इन्हें इतना अच्छा execute किया, तो I'm pretty sure if something went wrong, they were ready for a backup plan. So I guess इसलिए something did, something worked. Because either there was like failing in the investigation, or they were just too good. Because there were other cases that were sort of similar. Like I remember a US case tha, and it was a bunch of amateur hackers, like kids. There were literally children involved, and I believe some of them managed to get into either the FBI or the CIA database. And like they were so good at covering up their tracks. हाँ, मुझे इससे एक और बात याद आई. मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी ना उधर हवावे में, जाहिर सी बात है, IT कंपनी. और जो खैर मैं तो आई वॉज इन PR एंड सेल्स, लेकिन जो बाकी थे ना वो थे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड IT गाइज एंड एवरीथिंग. तो हमारी जब ओरिएंटेशन हो रही थी ना, तो उसमें स्पेसिफिकली हवावे के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने आके ना सबसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ डेटाबेस हैक करने की किसी ने कोशिश नहीं करनी. दैट वाज अ गाइडलाइन दैट वाज गिवन कि आपको आता है, मुझे पता है सारा कुछ है, बट दे वर लाइक कि प्लीज़ ये ना आपने कोशिश भी नहीं करनी, बिकॉज वो इतना जल्दी डिटेक्ट होता है और उसके बाद सीधे सीधे आपको जॉब से निकाल देते हैं. और वो हमारे सारे जितनी भी डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे थे उन्हें सारी उसको ना कन्फिगर कर दिया था कि हम उनके डेटाबेसेस के अलावा कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते. आप गूगल एक्सेस नहीं कर सकते थे उनके लैपटॉप्स पे. हाँ, मेरा पर्सनल लैपटॉप ने कन्फिगर किया था. मैं उस पर मैंने क्योंकि डिज़ाइनिंग करनी थी तो नहीं मैं अपना पर्सनल लेके गई थी. उनको configure किया. वो सारा डेटा आपका डिलीट कर देते हैं, तो मैंने अपना ट्रांसफ़र कर लिया था. खैर, लेकिन जब कन्फिगर हुआ, मुझे जब उन्हें प्रेजेंटेशन और डिज़ाइनिंग के लिए कहा था, तो मैंने कैनवा यूज़ किया था. अब मैं कैनवास पे एक्सेस कर रही हूँ, मुझे खोल नहीं रहा, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड. फिर मैं गई, फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि दिस इज़ वन साइट दैट आई वांट टू एक्सेस, आप मुझे इसका कोड चेंज कर दें. तो मुझे उस IT वाले बंदे ने उसको कन्फिगर करके दिया. उसने मेरी कन्फिगरेशन चेंज करके उसको बताया कि अच्छा क्या चाहिए. मैंने कहा मुझे ChatGPT चाहिए, मुझे कैनवा चाहिए और मुझे गूगल चाहिए. ये 3 चीज़ों का कमांड दिया वहाँ पे, एंड देन आई वाज अलाउड टू एक्सेस देम. Nice. See, they were actually careful. उन्होंने पहले ही बता दिया था अपने एम्प्लॉइज़ को. So security matters. Exactly, you have to be careful. You have to be. Huawei is it's a company जिसकी firewalls बहुत अच्छी हैं. Like they have a very good system, and क्योंकि Chinese organization है. And the same case that I was mentioning, I don't remember the exact details, but it was a bunch of groups of like kids basically, and
the way they had started out, if I'm not wrong, was they were hacking into like Sony and Microsoft because they wanted early access to game releases. Unreleased pictures, yes, movies So, और like, सारा कुछ, हाँ. Yeah, they just wanted game releases हो जाए, and then they would hand them out to their friends or even sell them illegally online. And that's how it started, and it ended up with them hacking like the CIA or the FBI, and it was a very stupid mistake that got them caught. I think one of them was like calling the FBI or something and making fun of them. I could be wrong my on God, this, that is but silly. I believe that was what the case was. So I mean, is tarah you can get away with it, but you can also get caught. Silly mistakes always make you. Yeah, I feel Downfall like that's hota the hai kabra. moral of the story. Quit while you're Yeah. ahead. Ek to. Exactly. Or like don't commit crime. दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था, like what if one of the बांग्लादेश के जो insiders थे, like Federal State Bank के ही, what if one of them was in charge of this case? इसके could बारे be. में कुछ था? Because like you said, they didn't get caught, right? No one was caught, so we don't know. So, like, but it, नहीं, इसकी Now I'm investigator was an American. Okay. BAE Systems का जो head है, Adrian Nish, he was responsible. He was also responsible for the Sony Pictures investigation. Oh, So he's the same guy. like she's Okay. asking कि What if like like पूरी investigation में was it possible that any bank employee was part of the heist? one of the insiders Could be, were could be. actually along with the pride? हाँ. हो सकता है, but it's hacking ना, तो वो तो जो data मिल रहा है, they don't need a person for that. True, that's true. But they covered up their tracks pretty well, so. So, in conclusion, the Bangladesh bank heist reminds us that sometimes the biggest crimes aren't carried out with guns. They're done quietly behind screens, just with few lines of code. And sometimes a simple typo can bring a criminal empire crashing down. Thanks for sipping chai with us on Chai and Crime. Don't forget to follow, rate, and share if you enjoyed today's story. New episodes every week only on YouTube. Until next time, keep your chai hot and your secrets safe.